Hello everyone. In this video I am doing one case study based question based on the chapter quadrilaterals of class 9th. So question I have taken from Google. It is Anjali and Meena were trying to prove the midpoint theorem. Two girls are there. They are trying to prove the midpoint theorem. They draw a triangle ABC where D and E are found to be the midpoints of AB and AC respectively. And DF was joined and extended to F such that DE is equal to EF and FC is also joined. Now based upon this some questions are there. So see, first I am drawing the figure based upon the statement. It is told that Anjali and Meena are the two friends and they want to prove the midpoint theorem. So for this they have drawn a triangle ABC. So you can see here, this is the triangle and the name is ABC. This triangle is drawn. Further it is told that D and E are the midpoints. This is D point and this is E point, the midpoint of these triangles. This triangle ABC, and these midpoints are joined. This is DE, and further it is written that DE was joined and extended to F. तो ये DE को मैं F तक extend कर रहा हूं and FC is also joined. ये point F और ये आपने इसको भी क्या कर दिया, join. This is F point, right? So further questions are asked on this basis. एक इसमें क्या दे रखा है, DE and EF are equal. DE and EF are equal. This is equal to this. So based upon this some questions are there. This is part number 1. I am showing the question this to you. This is written, triangle ADE and triangle CFE are congruent by which criterion? तो मैं यहां क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है वो आपको करके दिखाऊंगा. इन ट्राइंगल ADE and triangle CFE, right? So let's check the triangles. This is triangle ADE. ADE में if E is the midpoint, so AE will be equal to CE. So I have written here AE is equal to CE. Why? Because E is the midpoint. So I am not writing in detail because it is case study based question, 1 mark question. Then angle 1 and angle 2 can be taken equal. They are vertically opposite angles, right? And DE is equal to EF. So you can easily tell now that which condition is this. This is side angle side. Side angle side. So by SAS congruence condition, triangle ADE is congruent to triangle CFE. So both the triangles are congruent. तो congruent condition ही main पूछी गई थी. So it is SAS condition. Now question number 2, what is asked? Let's see that. Question number 2 is, angle FEFC is equal to which angle? और 4 ऑप्शंस भी दे रखी हैं. तो आप ये देखो, एंगल EFC. अब आपने क्या करना है, ये देखो आपके पास 2 ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, मैंने ये रफ में ऐसे लिख लिए. कौन कौन सी थी? एक ADE थी और दूसरी थी CFE, राइट? अब उसने क्या बोला, EFC. दिस इज EFC. आप कैसे ले रहे हैं सीक्वेंस, 1 2 3.
EFC, तो इसका भी 1 2 3 ले लो, 1 2 3, तो EFC एंगल विल बी इक्वल टू एंगल EDA, एंगल EDA, राइट। तो इसमें ऑप्शंस दे रखी हैं, आप इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो लिख देंगे, दिस इज EDA। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ECF इज इक्वल टू विच एंगल, तो लिखेंगे दिस इज थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन, एंगल ECF। आप फिर से जो आपने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी उसको एक बार फिर से लिख लो, ADE रफ वर्क है आपका, CFE। अब उसने कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया, एंगल ECF, ECF, यानी ये नंबर तो थे 1 2 3, उसने लिया ECF यानी 1 3 2, 1 3 2, लास्ट पहला मिडल, लास्ट पहला मिडल, तो EAD लिखेंगे आप, EAD। सो एंगल ECF इज इक्वल टू एंगल EAD, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस that I am showing, this is CF is equal to what, CF किसके इक्वल होगा, so here I am writing CF is equal to what, ये देखो यहां CF, this is CF, तो ये BCFD जो है वो पैरेललोग्राम प्रूव होंगे, राइट, क्योंकि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो अगर DE BC के पैरेलल है तो DF पूरा BC के पैरेलल होगा, और ये जो है बाई कंस्ट्रक्शन से, तो BCFD पैरेललोग्राम है, राइट। अब उसने पूछा क्या है कि CF अंडरस्टूड है BD के इक्वल होगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, so CF is equal to BD. Now question number 5. So question number 5 is this, CF is parallel to what, अब आप देख सकते हो, this is options हैं इसकी, options देख लो आप, CF is parallel to AE CE BD AC, so CF is parallel to BD. Why? Opposite sides of the parallelogram are parallel also. तो आप लिखेंगे CF is parallel to BD. तो इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, BD। तो ये था एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने गूगल से सर्च किया था, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन in the most easiest way. Hope the solution of this question explained by me will prove to be helpful for you. Thank you.